Okay, Ji, let's start the software part of our lab. So the equipment we will be using is two routers. PC ले लें, ठीक है, PC or laptop, generic laptop, printer, whatever you want to use. And finally, for your connections, we will be using switches, ठीक है. Actually switches हम इसलिए use करते हैं because they have a large number of ports availability, ठीक है. So because of that factor we actually use switches for further connection with your router. अच्छा, केबल जो हम यूज़ करेंगे, this is fast ethernet cable and ये केबल फॉर योर जो कम्युनिकेशन होती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन मोस्टली फास्ट इंटरनेट केबल के थ्रू ही होती है. फर्दर इस स्विच को भी आप कनेक्ट करेंगे विद योर फास्ट इथरनेट केबल विद योर राउटर. कंसोल केबल इज़ नॉट यूज राइट नाउ, ठीक है. जब आप आगे यूज़ करेंगे इन योर लैब नंबर 3 और 4, देन आपको उसका यूज़ क्लियर हो जाएगा. नाउ ये जो दो राउटर्स हैं, इनका आपस में कनेक्शन जो है वो होगा सीरियल कनेक्शन. सो बिफोर गोइंग इनटू सीरियल कनेक्शन, as I showed in my slides, we will be using a module जिसमें serial जो आपकी पोर्ट होती है उसका कनेक्शन अवेलेबल होता है, right? So this is your serial interface card, and virtually we will be putting this serial interface card in our router module, right? So switch off your router and ये जो module है, this is basically serial network module, right? So all we will be doing is that we will put it in our router and just switch it on. Similarly, for your second router, switch off your router, take your big 2T serial interface card, put it in your router and switch it back on, ठीक है. Now इन दोनों का कनेक्शन जो है वो सीरियल केबल जो बेसिकली DC E and DTE केबल है, this will be used. Either select this serial cable or you can choose the automatic wire selection option, right? So this is your serial connection between your routers. Now up till this part our links are on. उससे onwards अगर आप देखें तो links off हैं. So for my ease, अच्छा, one more option, go in your option and preferences and turn on your port label always shown. Mark it tick, okay. इससे ये होगा कि these port interface numbers, for example if it is FA00 serial 010, this will be visible to you, जिससे आपको programming के time पे when you are entering codes it will be easier in this case, right? So let's just initially I will write the IP addresses जो मैं assign करने जा रही हूँ, and then we will actually feed them into our router. So this is, let's say, give it I'm using class C addressing, so 168.1.1. so this port of my router I will assign it this address, ठीक है. Let's just move toward the other side. इस पोर्ट को let's give it an IP address of 196.111.3.1. ठीक सर. अच्छा, इसी तरह ये साइड भी it's almost same network, so 196.111.3.2. now this is your अदर लैन नेटवर्क. ये आपके दो लैन नेटवर्क्स हैं. बीच में आपका यूँ समझें कि सेट ऑफ राउटर्स हैं, एंड एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल राउटर्स, ठीक है. जब आपने सपोज यहाँ से कम्युनिकेट करना है विद एनी सिस्टम, सो 5 to 10 15 राउटर्स होते हैं, ठीक है. सो उन राउटर्स को फिलहाल टेम्परेरीली आई एम रिप्रेजेंटिंग विद ओनली 2, ठीक है. छोटा नेटवर्क बनाया है and I'm using a set of 2 routers. Let's say I will be giving this LAN network a gateway address of this, ठीक है. अच्छा जी, so let's just start putting those addresses in my CLI configuration mode, ठीक. अच्छा जी, ये जो आपका modes हैं, there are a set of 4 modes. First one is user mode, then is
यूज़र मोड में it is just the initial startup mode, ठीक है. And hyperterminal या telnet software should be present in your system, and that is enough. आप just initial startup जो commands है उसमें run कर सकते हैं. Next is your privilege mode, which can be used for rebooting and operating parameters, right? Both of these stages are actually they allow you to access limited commands, ठीक है. Configuration mode is for configuration parameters and routing table, routing algorithms. All of them can be activated in this stage. Finally जो आपके interfaces होते हैं, ethernet and serial port जो आपकी configuration है वो आप interface mode में करते हैं. अच्छा, switching from your first mode जो आपका यूज़र मोड है, all you have to do is you have to type enable, then you enter into privilege mode. Now changing from privilege to configuration, all you have to type is configure terminal. And finally changing from configuration mode to interface mode, all you have to type is interface and the name of that interface. Let's see, I will be going through all these steps. This is my first mode and I have to write enable. That is all, ठीक है. आप पूरा ना भी लिखें but ये पिक कर लेता है. Config terminal, again I am not writing complete but still it is picking it up, ठीक है. अच्छा जी, ज़रा इधर आ जाते हैं जी. हमारा इंटरफेस है ये वाला जिसको हम IP एड्रेस ये देना चाहते हैं, FA01 FA00 and I want to assign IP address of 192.168.1.1 and a mask of, because ये class C addressing है तो ये हो गया इसका mask, ठीक है. no shutdown and the link is turned on. Similarly जो मेरा दूसरा serial interface है उसको भी मैं IP address assign करूँगी जो मैंने ऊपर mention किया हुआ है. for my ease interface serial 0/1/0, right? And IP address इसका IP एड्रेस है 196.111.3.1 with a mask of, right? Again type no shutdown and your link will be turned on. अच्छा, एक दफ़ा you can check them here, ठीक. ये आपका था 0/0, आपने इसको IP एड्रेस असाइन किया and it's in on state. दूसरा आपका है, अच्छा इसमें क्योंकि क्लॉक रेट नहीं सेट तो इस वजह से ये एक पॉइंट मुझसे रह गया. लेट्स मूव टू क्लॉक रेट. क्लॉक रेट सीरियल में आपका रिक्वायरमेंट होती है इसकी, बिकॉज दिस इज़ द स्पेसिफिक रेट जिस पे आपका डाटा serial wise send होता है. So you have to set a clock rate for serial interface cables, right? So finally अब मेरे पोर्ट में clock rate है, it's on state, IP address, mask, everything fine. So let's move toward your second router, but इसमें मैं instead of applying those command I will be going for my direct stepping, ठीक है. ये जैसे कि मेरा पहला यहाँ पे जो पोर्ट है that is FA00 and I want to assign, ये सारी कमांड्स आप देखेंगे नीचे रन होती जाएंगी जो जो मैं एंटर करती जाऊंगी. दिस इज माय FA00, आई हैव सिलेक्टेड माय FA00 एंड इसका IP एड्रेस जो मैंने साथ मेंशन किया है वो है, and similarly इसका subnet mask class C है. So this is the subnet mask and I'm turning it on, so you can see कि ये auto पे commands यहाँ पे no shutdown and its link is turned on. अब दूसरा मेरा जो serial interface है FA010, this one, ठीक. इस पे मुझे पहले IP एड्रेस दे लेते हैं which is 196.111.3.2. mask, set your clock rate and turn it on, so everything is enabled.
अच्छा जी, व्हेन आपके सारे लिंक्स ऑन हो जाते हैं, देन व्हाट इज लेफ्ट, इसका आईपी एड्रेसिंग देना, इसकी आईपी एड्रेस, ठीक है, क्योंकि ये आपका गेटवे है, सो आईपी एड्रेस वुड बी, नेटवर्क एड्रेस वुड बी सेम, जस्ट ये वन आप चेंज करेंगे जो कि गेटवे को आप दे चुके हैं। सो इट शुड बी आइदर 10 11 12 13, जो भी 120 आप रखना चाहते हैं इसके लिए रख दें, इसके लिए आप चेंज कर दें, जो यूज़ हो चुका है वो नहीं करेंगे, कोई और एड्रेस यूज़ कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट गेटवे देते हैं, यानी कि स्टैटिक राउटिंग करते हैं फॉर आवर फर्स्ट राउटर। अच्छा जी, इस फेज से एग्जिट करते हैं एंड आई एम बेसिकली गिविंग आईपी रूट फॉर माय दिस राउटर। अब देना किस तरह है, ये जो आपका रूट है इसको आप कुछ इस तरह मेंशन करेंगे कि बिकॉज दिस लैन इजंट विजिबल टू दिस राउटर, सो इट मीन्स कि आई हैव टू गिव द रूट ऑफ दीज एड्रेसेस, मीन्स कोई भी एड्रेस अगर इस आईपी एड्रेस से कोई भी पैकेट आता है इन दैट केस, या इस आईपी एड्रेस के लिए कोई भी पैकेट इस राउटर के पास आता है, सो विद दिस मास्क, सो उसको किसको सेंड करना है, उसको इस राउटर एड्रेस पे सेंड करना है, विच इज़ 196.111.3.2, ठीक। सो दिस इज़ माई रूट, यू कैन चेक इट हेयर विद स्टैटिक, ठीक है, यू कैन सी इट इज़ मेंशन। इसको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू एक्सेस वाया दिस एड्रेस, ठीक है, सो दिस इज एनेबल। लेट्स मूव टूवर्ड दिस राउटर। ओके जी, इसमें भी सेम कमांड्स आप एंटर करेंगे। लेट्स यहाँ पे ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट चले जाते हैं, या लेट्स गो विद द एंटरिंग ऑप्शन एग्जिट अगेन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या करना था जी, आईपी रूट एंड इस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए विच इज़ 192.168.1. एनी एड्रेस, ठीक है, उस नेटवर्क पे बहुत से पीसीज हो सकते हैं, सो वी आर जस्ट मेंशनिंग इफ दिस नेटवर्क एड्रेस इज रिसीव्ड, ठीक है, तो आपने किधर डायरेक्ट करना है जी, इस राउटर ने उसके पैकेट को इस एड्रेस पे डायरेक्ट करना है 196.111.3.1. so the route is mentioned for both routers. आप इसको configuration static में जाके मैं चेक कर लें, सी इस पे इसके पैकेट को should be directed to this router। अगर ये स्टेप आप नहीं करेंगे then your packet won't reach, ठीक है। मैं ज़रा इसको जल्दी करते हैं जी, डेस्कटॉप में जाते हैं, let's give the IP address according to your mask 192.168, this is my gateway, so उससे थोड़ा सा चेंज करके let's give it 10। गेटवे मेरा क्या था जी, जहाँ से पैकेट बाहर भेजता है, दैट इज़ 192.168.1.1, राइट। सो मैंने PC0 को यहाँ पे एड्रेसिंग की है, आप बेशक जब आप खुद परफॉर्म करें तो आप सबको दे दें आईपी एड्रेस एंड चेक देम। लेट्स गो फॉर दिस वन एंड दिस इज़ PC लैपटॉप 0 एंड एड्रेस मुझे देना है 199.166.1. अगेन लेट्स गिव इट 10, आपकी मर्जी, आप कोई भी दे सकते हैं। गेटवे इज जी वो पॉइंट जहाँ से आपका पैकेट वायर की नेटवर्क्स पे जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आईपी एड्रेस दे चुकी हूँ, उसको दे चुकी हूँ, जिन दो को नहीं दिया वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक आप आईपी एड्रेस नहीं देंगे। सो लेट्स पिंग वन पीसी, यानी कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद वन पीसी जिसका आईपी एड्रेस है लेट्स पिंग 199.166.1.10, राइट। सो लेट्स सी रिप्लाई रिसीव होता है। ओके जी, रिप्लाई इज रिसीव, इट मीन्स आपका जो राउटिंग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सक्सेसफुल। सो लेट्स जस्ट डू वन मोर स्टेप। अगर आप इस रूट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, लेट्स जस्ट रिमूव इट। इन दिस केस अगेन यू वांट टू कम्युनिकेट, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, let's just rerun the command and you will see the difference. Now it's not communicating with that PC, ठीक है। So static routing or dynamic routing, router should have that address
to communicate with the other set of PCs. So this is all for your lab part. Let's just end the lab here. So Allah Hafiz ji.